Pauli matrices, we have sigma 1, sigma 2, sigma 3. Pauli matrices are given. Show that sigma j, sigma k is equal to 2i, sigma I. So we have a commutation relation, as we know that relations. Vector A matrices B is equal to A B minus B A. Sigma 1, sigma 2 is equal to sigma 1, sigma 2 minus sigma 2, sigma 1. Now we find sigma 1 and sigma 2. Sigma 1 and sigma 2 is equal to sigma 1 0, 1 1 0, 0 minus sigma 2 is 0 minus I is 0. आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू जाएगी I 0 0 माइनस I. अब सिग्मा 2 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0 माइनस I माइनस 0 इज सिग्मा 2. Sigma 1 is 0 1 1 0. After multiplication we have multiply both matrices. Sigma 1 and sigma 2 is 2i 0 0 minus 2i. After multiplication we take common 2i 1 0. When both matrices are multiplied, we have sigma 2 sigma 1 is equal to sigma 2 sigma 1 is multiplied is minus I 0 0 I. Now we have sigma 1 sigma 2 is equal to sigma 1 sigma 2 minus sigma 2 sigma 1. The value of sigma 1 and sigma 2 is I 0 0 minus I. नेगेटिव सिग्मा 2 और सिग्मा 1 की वैल्यू क्या माइनस I 0 0 I. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड I minus I minus I. तो माइनस माइनस इज प्लस 2i. 0 minus 0 is 0 0 minus 0 is 0 minus I is माइनस का 2i. वी टेक कॉमन 2i. तो यहाँ पे बचेगा 1 0 0 minus 1. 2i is equal to this matrix is equal to sigma 3. So we have sigma 1 comma sigma 2 is equal to 2i sigma 3. Now we can write this sigma 2 sigma 3 is equal to 2 I sigma 2. Sigma 3 sigma 1 is equal to 2i sigma I think sigma 3 and sigma 1 2i sigma 2. Sigma 2 sigma 3 is sigma 1. Sigma 1 and sigma 2 is 3. So we can write this sigma j sigma k is equal to 2i summation a j k e sigma e. This is called Levi-Civita symbol. This is called Levi-Civita symbol. We repeat this. Pauli matrices given show that sigma j sigma k is equal to 2i sigma e. Commutation relation. AB vector matrix AB minus BA. Sigma 1 sigma 2 is equal to sigma 1 sigma 2 minus sigma 2 sigma 1. So sigma 1 or sigma 2 we first of all find this. So sigma 1 sigma 2 sigma 1 value is given, write this. Sigma 2 this value is given, write this. Multiplication both side both matrices we have I 0 0 minus I. Sigma 2 sigma 1 we find. Secondly we find sigma 2 sigma 1. Sigma 2 is given, sigma 1 is given. Both matrices are after multiply we have this value sigma 2 sigma 1. Now put in this formula sigma 1 sigma 2 minus sigma 2 sigma 1. तो हमने sigma 1 sigma 2 की वैल्यू और sigma 2 और sigma 1 की वैल्यू पुट करने के बाद
आपस में नेगेटिव किया, माइनस किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई 2i 0 0 माइनस 2i। इनमें से हमने 2i कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू बची। ये हमारे पास बराबर है सिग्मा 3 1 0 0 माइनस आई 1 0 0 माइनस आई सिग्मा 3 के बराबर है। हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 2i सिग्मा 3 के बराबर है। तो इस तरह हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा 2 सिग्मा 3 हमारे पास बराबर होगा 2i सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 1 2i इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिग्मा j सिग्मा k इज इक्वल टू 2i सिग्मा e। ओके, 2i सिग्मा e। बट दिस रिलेशन दिस सैम्पल इज नॉन एज लेवी-सेविटस सैम्पल E12 E123 E321 E321 is equal to 1, all other vanish. Now we have proved that this Pauli matrices.